नमस्ते सभी को, स्वागत किया है मेरे एडिशन से। और बात करेंगे आज Q3 रिजल्ट के बारे में। और आप लोगों ने देखा Q3 रिजल्ट टुडे लाइव, इंडिको, DLF, इंडियन बैंक, इंडियन एनर्जी सॉल्यूशन, ATGL, Coforge, Mphasis, Radico Khaitan, APL Apollo Tubes, client to announce Q3 result. Eternal Thangamile Jewellery, Dr. Reddy Lab, KEI, HPCL, PNB Housing Wire, Energy Share in Focus. Q3 result today, 2nd Jan 2026. Live updates, final all the latest Q3 result 2026 update. Q3 result today, 2nd Jan 2026 live update, final all the latest Q3 result 2026 update of InterGlobe Aviation, DLF, Indian Bank, Adani Energy Solution, Adani Total Gas, Coforge, Mphasis, APL Apollo Tubes, Radico Khaitan, Premier Energy, Go Digit, General Insurance, IIFL Finance, Syngene International, Aditya Birla Sun Life, AMC, Bandhan Bank, Computer Age Management Service, Gujarat State Protens, Zensar Technologies, client Ujjivan, Family Banks, Mphasis Finance Companies India, Ideaforge Life Science, Travenues Technologies, Zee Entertainment Enterprise, Bluestone Jewellery and Lifestyle, Tanla Platform, V-Mart Retail, और many others companies declare their Q3 फाइनेंस रिजल्ट। और आप लोगों ने देखा वेयर्स इंजीनियर जो Q3 रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है कंपनी ने। और आप लोगों ने देखा शेयर जंप कर रहे हैं 12% के। और शेयर्स ऑफ वेयर इंजीनियर रेल 12% to raise 1,692 on the NSE, hitting an early high of raise 2,722.80 against the previous close of raise 2,419. It reported it 124% YoY jumps in consolidated। और आप लोगों ने देखा जो Q3 रिजल्ट लाइव अपडेट्स हो रहा है PNB हाउसिंग। और आप लोगों ने देखा ये PNB हाउसिंग का रिजल्ट आ रहा है। और PNB हाउसिंग शेयर हैव डिक्लाइन फर्दर और डाउन 7.3 at the moment, and net profit हो रहा है 10.6% at 521 crore as 471 crore, and double I जो परसेंट है 12.8%। और आप लोगों ने देखा जो रिजल्ट। और Q3 result live updates, Jindal Stainless say on track to achieve financial year 2026 volume growth guidance of 10 to 10%. Jindal Stainless on CNBC TV 18 on track to achieve financial year 2026 volume growth guidance of 9 to 10%.